Number 7. Enter the following transactions in the analytical petty cash book under impress system for the month of February 2011. First one, received a check, that is the first date. A is 1. A is 1. Received a check from head cashier of 1500. Now this is the first month, very first month of the business. That's why you are receiving a check directly. Otherwise, you would have got some balance, original balance. There is no balance available, so it's basically you're getting the money directly from the head cashier, 1500. So why are we getting the money from the head cashier? Because you remember the mechanism of petty cash book. How does it work? The receipt of the petty cash book is very small as compared to the payment. Exactly. Receipts of petty cash are very small as compared to the payment. पेटी कैश को बहुत सारे पैसे मिलते नहीं है, पेमेंट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो उसको खर्चा निकालना होता है. तो फ्रॉम वेयर डज ही गेट द मनी? ही गेट्स द मनी फ्रॉम द मेन कैशियर. मेन कैशियर उसको हर महीने या पीरियड के बिगनिंग में पैसे दे देगा और उसके हेल्प से वो पेमेंट्स करेगा. तो यहाँ पे वही दिया, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हेड कैशियर ऑफ 1500 रुपीज. 1500 रुपए उसको मिल गए. तो ये कौन से कॉलम में लिखोगे आप? पेटी कैश बुक के कौन से कॉलम में? रिसीट में कि पेमेंट में? Receipt. Receipt. So this money will go under amount received column. Okay. अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में जाएगा. सबसे पहला जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कॉलम होता है अमाउंट रिसीव का कॉलम, इस अमाउंट रिसीव इसमें चला जाएगा. ठीक है. देन वी हैव पेड फॉर पेंसिल्स, इंक पॉट्स एंड पेपर्स. नाउ यूज योर ब्रेन. इट्स अ पेमेंट. पेमेंट है तो कॉलम में आपको सेग्रीगेट करना है, राइट? तो नाउ थिंक अबाउट इट. Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेरी गुड. इंक पॉट्स, पेंसिल्स, पेपर्स, ये सब जाएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. सो जस्ट राइट देयर इन शॉर्ट पी एंड एस टी. पी एंड एस टी लिख दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. पेड फॉर रिपेयर्स, व्हिच कॉलम इट शुड गो इन? पेमेंट फॉर रिपेयर्स. थिंक अबाउट इट. Repairs and renewals. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स. ओके. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स में चला जाएगा बिकॉज रिपेयर एक्सपेंस है. पेड टैक्सी फेयर टू मैनेजर. टैक्सी फेयर टू मैनेजर. Traveling and conveyance. Very good. Traveling and conveyance. Employee का traveling का expense. Then subscription for newspaper. Subscription for newspaper. Postage and telegram. No. Subscription sundry expense. मतलब आपका monthly जो आप पे करते हो ना, घर पे न्यूज़पेपर आता है, ऑफिस में न्यूज़पेपर आता है, वैसे जर्नल से मंगवाते हो आप ऑफिस में, या फिर मैगजीन्स मंगवाते हो, मेडिकल जर्नल्स या कुछ डॉक्टर के केस में. So all these are going under your sundry expense. Cannot be put under any other head. Subscription is that monthly expense. Paid for refreshment to customers. Staff welfare. It is not staff welfare. स्टाफ वेलफेयर है ना, जनरली हम लोग तब लिखते हैं व्हेन वी गिव रिफ्रेशमेंट टू आवर एम्प्लॉइज. ओके. एम्प्लॉय का खाना पीना घूमना फिरना. So sundry over here. Customer welfare. कैन नहीं, कस्टमर वेलफेयर जैसा कुछ नहीं होता. कैन पुट इट अंडर सन्ड्री, या फिर यू कैन पुट इट अंडर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी. Because the reason behind paying anything for customer, why do you do anything for your customer? For your publicity. Customer is not your employee, no? He will buy goods from you. So anything done for the customer, whether it is giving free samples or making arrangement for him, refreshment arrangement, entertainment arrangement, they are all for publicity purpose. Customer के लिए कुछ भी किया, so that is all your advertisement and publicity. So either you can put advertisement or sundry, दोनों चलेगा. आपको क्वेश्चन में आइडिया आ जाएगा, देख देख के अभी हम लोग और प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें आइडिया आ जाएगा. तो बोलने का मतलब डोंट स्टिक टू द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. अगर मैं आपको बोलूं चलो प्रिंटेड बिल बुक, प्रिंटेड इनवॉइस बुक, प्रिंटेड डेबिट नोटबुक, प्रिंटेड क्रेडिट नोटबुक, ये सब जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एक्सपेंस. बट अगर मैं आपको बोलूं प्रिंटेड ब्रोशर्स, प्रिंटेड कैटलॉग्स, प्रिंटेड सेल्स लिटरेचर, दैट इज एडवर्टाइज. है दोनों प्रिंटिंग. सो डोंट गो फॉर द वर्ड्स. Understand the nature of the transaction. Why is it happening? Are you getting that? Refreshment तो refreshment ही है. अगर employee के लिए कर रहे हो मतलब अपना business के लिए कर रहे हो. That is your staff welfare.
But if you are doing it for the customers, then the purpose is different. No? Purpose is for the purpose of publicity. That is advertising. So keep that in mind. Don't stick to the word. Just understand the meaning of the transaction, nature of the transaction, and then decide. It's not difficult. एक दो तीन example करोगे तो आपको आ जाता है. Paid to Rajat in settlement of his account. Paid to Rajat in settlement of his account. Ledger. Very good. Ledger. Remember that last column, ledger. क्यों था वो ledger का column? Ledger was not an account. वो ledger account वाला account नहीं है, वो ledger का column है खाली. उस column में क्या record करना है आपको? Personal and real. Personal and real account. Small value assets and small value personal account transactions. So paid to Rajat, that is Rajat to petty cash is the entry. So that will go in ledger part. Paid wages to workers. Wages. Paid electricity bill. Sundry Electricity, expenses. you can put it under sundry. You can also have a separate column for electricity. Okay, both the ways it is fine. So if there is something like this, and instead of like one column, we put it in another column, will they give us wrong? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट कॉलम में डालो. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिंटिंग स्टेशनरी का एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया या पोस्टेज का प्रिंटिंग में डाल दिया. ये नहीं होना चाहिए. यू कैन पुट इट अंडर सेपरेट कॉलम और यू कैन पुट इट अंडर सन्ड्री. दैट इज फाइन. सेपरेट कॉलम या सन्ड्री में डालो तो चलेगा. पेड फॉर कैरेज एंड अनलोडिंग चार्जेस. Carriage and Carriage and cartage. Purchased a wooden shelf, 160 rupees. Ledger. It's a small Ledger. asset, furniture, so that will go under ledger. Also find the amount to be received by the petty cashier from the main cashier on 1st March 2011. So we'll find out that. So let's decide. Wooden shelves. Sorry, Wooden shelves. wooden shelf is furniture, right? That is ledger, small value asset, wooden shelf. That is furniture asset. The small value asset goes under which column? So that will go under ledger, right? So ledger में चला जाएगा वो. So what all columns we are having? Just decide that on first for the payment side. What all columns we are having? Starting with, I think we have printing and stationery. सबसे पहले. Do we have postage and telegram? No. Do we have traveling and conveyance? Yes. Do we have carriage and cartage? Yes. Do we have advertisement publicity? Yes, because you have done something for the customers. Then we have repair and renewals है अपने पास. Repairs and renewals, yes. We have repairs and renewals also. Do we have staff welfare? No. Don't have staff welfare. Do we have wages? Yes. Yes, we have wages. Do we have और कौन सा है अपने पास? बस हो गया. Sundry, LF and ledger. Electricity you can put it under sundry. Electricity you can put it under sundry. You can also show it under a separate column if you want. No problem. Electricity sundry में भी डाल सकते हो. Separate column भी रख सकते हो. No issues. Now petty cash book में usually columns में ऐसे इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि different colleges have different things over there. Some colleges they have only 5 columns. Like Somaya has SK Somaya hai, HR hai. HR Somaya, you have just 5 columns. Printing, stationery, postage, telegram, the first 5 which we have written in the format. Printing, postage, traveling, carriage, cartage, advertisement, and sundry LF ledger. उतना ही है. तो बाकी पोदार है या फिर एनएमटी बाई है. They prefer to have different columns for individual expenses. So it depends from college to college. What I am doing is पूरा exhaustive बता रहा हूँ आपको. ये HR में भी चल जाएगा, सोमैया में भी चल जाएगा, NMBTY में भी आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी कॉलेज. एक्स्ट्रा कॉलम बता दो इश्यू नहीं है. कम बताओगे तो कभी प्रॉब्लम कर सकते. तो ऊपर हेडिंग लेना है इन द पेटी कैश बुक ऑफ. प्रैक्टिकली आप कैसे डिसाइड करते हो कौन से कॉलम्स बनाने हैं? Practically it is decided by the business on the frequency of the expense. अगर वो expense बहुत बड़ा है और बहुत बार हो रहा है ना तो आप separate column में दिखाते हो. Obviously it makes sense ना to show the details. लेकिन वो expense बहुत ही छोटा है और बहुत ही infrequent है, घड़ी घड़ी नहीं हो रहा है तो आप उसको sundry में डाल देते हो. Simple as that. Okay? तो materiality concept है आपका. Materiality concept याद है?
डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी. डिस्क्लोजर बोलता है कि सब कुछ डिस्क्लोज करो, मटेरियलिटी बोलता है कि इंपॉर्टेंट आइटम्स अच्छे से डिस्क्लोज करो. जो नॉन इम्पॉर्टेंट है उसको यू कैन मर्ज, यू कैन क्लब, इवन इफ यू इग्नोर समटाइम्स, इट इज फाइन. नॉन इम्पॉर्टेंट मतलब मनी वैल्यू इतना हाई नहीं है उसका. अकाउंट्स मेनली फोकस ऑन द हाई मनी वैल्यू ट्रांजैक्शन. ओके, हाई मनी वैल्यू ट्रांजैक्शन का फोकस आपका परफेक्ट है. कॉलम्स में आपका है CBF, दैट इज कैश बुक फोलियो. We have particulars. VNO stands for voucher number because we have many small amount ka payments. Total payments we have. Then individual head में है printing and stationery, traveling and conveyance, carriage and cartage, advertisement and publicity, wages, repairs and renewals, sundry, LF, ledger. Sundry, LF and ledger. Okay. Videos on, come on. Now how to record? This is a journal. Remember, this is not a ledger. It is a journal. इसके बाद लेजर अकाउंट्स भी बनते हैं, वो आपको नहीं है बट मैं बता दूंगा फिर भी आपको. अभी लेजर में, जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है देखो. रिकॉर्डिंग इज मोर और लेस सिमिलर टू योर कैश बुक. जैसे कैश बुक में याद है टू और बाय होता था, लेफ्ट हैंड साइड रिसीट के लिए टू, पेमेंट्स के लिए बाय. वैसे ही करना है यहाँ पे पेटी कैश में, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑल द मोर सिंपल हो जाता है. देखो कैसे. पहला अमाउंट कहाँ पे जाएगा, वो जो चेक रिसीव किया आपने, विच साइड, विच कॉलम, Amount received. अमाउंट रिसीव्ड है ना, तो रिसीट है, तो रिसीट के लिए टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वुड बी टू, पेमेंट्स के लिए बाय, एंड चेक आया है ना तो टू बैंक. योर एंट्री विल बी पेटी कैश टू बैंक, राइट. पेटी कैश में यू विल राइट लाइक टू बैंक अकाउंट. दिस इज नॉट अ लेजर, दिस इज अ जर्नल ओनली. लेजर में अलग से आ जाएगा, पेटी कैश में टू बैंक अकाउंट, बैंक में बाय पेटी कैश, कैश बुक में बाय पेटी कैश. तो पेटी कैश में टू बैंक और बैंक में बाय पेटी कैश. यहाँ पे डायरेक्टली टू बैंक लिख देने का, एंड डेट है आपका फर्स्ट डेट, 1 फरवरी, एंड अमाउंट में आ जाएगा 15. ओके. टोटल पेमेंट में डैश, तो पेमेंट नहीं है, रिसीट है. टू बैंक ऑन द रिसीट साइड. अकाउंट लिखो मत लिखो चलेगा, टू बाय का ध्यान रखना. जस्ट रिमेंबर अबाउट टू और बाय. Now everything is buy because everything is payment after this. सबके prefix में buy होगा 4th February. अभी when we are recording in petty cash, you can simply copy that question. Okay, because these particulars are not your posting entries. These are just showing the details in the journal. They'll play a part of your narration in a way. So how will I record the second one? Pencils, important paper. So I'll write here buy pencil. Sir, narration won't come under journal. So That's what. Pencil, important papers. This is taking place of the narration. This is taking place of the narration. Pencil, important paper मतलब मेरे को देख के पता चल जाएगा इधर pencil, import papers खरीदा हुआ है. Total value I'll write your 30 plus 20, 50 plus 50, 100. Total payment में भी लिखने का और printing stationery में भी लिखने का. This total payment stand for the horizontal total. अगर आपके पास 2-3 कॉलम का है उसका सब total payment में लिख जाएगा. Now, what is the difference between this by pencil, important paper and printing and stationery column? तो ये जितने columns आपको दिखाई दे रहे हैं ना, these columns represent the actual account. These columns represent the actual account. So if I ask you, what is the actual journal entry for this pencil, important paper? What will you tell me? What is the journal entry for buying pencil, important paper? Printing and stationery account debit to petty cash account. हाँ, पहले कैश लिखते थे तो अभी पेटी कैश लिखने का. इसकी जर्नल एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू पेटी कैश. एक्चुअल अकाउंट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Here we will show just the details of what we have purchased. This is not a ledger. Ledger अलग से बनेगा. उसमें
पेटी कैश अकाउंट में लिखोगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 2 पेटी कैश, दैट क्लियर। तो पेटी कैश में पूरा बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी घड़ी घड़ी नहीं लिखते हैं हम लोग, बाय सन्ड्रीज करके लिखते हैं, जैसे सेल्स बुक परचेज बुक से बनाते हैं ना, परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट, सन्ड्रीज करके वैसे पोस्टिंग होता है, वो मैं बताऊंगा आपको जब लेजर आ जाएगा। फिलहाल whatever given in the question you can chapify in your particulars. Column बराबर से लिखना because column is your actual representative of account. Okay, no separate narration. This only works for narration. Okay, no separate narration. बस यही है, हर एक आइटम ऐसे ही करना है आपको। पेड फॉर रिपेयर्स दिया है 6 February 11 बाय रिपेयर्स, सिंपली बाय रिपेयर्स 175 in the total and repairs column में 175 in the repairs column. And 10th February pay taxi fare to managers, buy taxi fare to manager, ditto छाप दो, कोई issue नहीं है। You can also write your buy traveling and conveyance, तो भी चलेगा। You can use the account head also. You can change the words also of the transaction. Narration कैसे लिखते हो? Own words, no hard and fast rule over it. Just छापोफाई the question अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 75 rupees and traveling के कॉलम में लिख दो 75 rupees। हॉरिजॉन्टल टोटल में लिखते रहना अमाउंट, वो हॉरिजॉन्टल हर एक डेट का टोटल है। Then 13th one is paid subscription for newspaper, so buy subscription of newspaper, इसका अमाउंट is 140 and ये जाएगा आपका सन्ड्री के हेड में 140। फिर 17th को paid for refreshment to customers, just you need to know whether it's a receipt or payment। receipt है तो to, payment है तो by, क्योंकि ये डेट और पर्टिकुलर कॉमन है ना, मैंने बताया था आपको, ये कॉमन बनाते हैं हम लोग। कॉमन इसलिए बनाते हैं क्योंकि रिसीट कुछ है ही नहीं, नाम के है, मेनली सब पेमेंट्स होते हैं ना, इसके लिए आप एक ही कॉमन हेड में दोनों दिखा देते हो। then we have refreshment to customer, so buy refreshment to customer, this will be 92 rupees and under advertisement, कस्टमर के लिए कुछ भी कर रहे हो so that will be advertisement। okay, and paid to Rajat in settlement of his account, so buy Rajat, simply write buy Rajat, this will be 130 rupees in the ledger column, 130। what is the entry for paying Rajat by petty cash? journal entry क्या बनेगा actual? Petty cash to Rajat. Petty cash. Rajat to petty cash, Rajat to petty cash. Rajat to petty cash, okay, Rajat to petty cash। ये लेजर उसका नाम नहीं है, लेजर तो ऐसे कॉमन नाम दिया हुआ है सबके लिए, एसेट और पर्सनल अकाउंट। तो एक्चुअल जर्नल एंट्री जब होगी तो भी रजट टू पेटी कैश। जब आप टैली वगैरह में करते हो तो वैसे ही करो, टैली वगैरह में ऐसा बुक बनता ही नहीं है। टैली वगैरह में मैं आपको चाहिए तो एक वीडियो भी शेयर करूंगा, हाउ टू रिकॉर्ड इन टैली पेटी कैश एंट्रीज, विल कम टू नो। तो टैली में तो आपको जैसे नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हो वैसे ही करना पड़ता है। रजट टू पेटी कैश, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू पेटी कैश, रिपेयर्स टू पेटी कैश, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू पेटी कैश, इंडिविजुअल एंट्रीज करना पड़ेगा, तो चॉइस नहीं है आपको, खाली वो कैश के जगह पेटी कैश में चला जाएगा, दैट इज ओनली डिफरेंट एलिमेंट। Then we have wages to workers, 22nd, so buy wages to workers, simply buy wages is also fine, 105। कौन से कॉलम हेड में जाएगा तो wages में 105 under wages। 24th को है paid electricity bill, so buy electricity, you can show it under a separate column also सेपरेट कॉलम में रखा वांदा नहीं, या फिर सन्ड्री में डाल दिया है, मैंने यहाँ पे सन्ड्री में लिखा हुआ है 255, तो भी चलेगा। Then we have paid for carriage and unloading charges, by carriage and unloading, this is 95, goes to carriage and cartage 95। पर्टिकुलर का आप जरा भी टेंशन मत लेना,
छापोफाई द क्वेश्चन, वर्ड ऊपर नीचे हो गया, अकाउंट नहीं लिखा, कोई और अकाउंट लिख दिया, और अकाउंट मतलब ऑल टुगेदर अलग अकाउंट नहीं होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट का लिख दिया समझो, एंटरटेनमेंट का रिफ्रेशमेंट, वेलफेयर, वो सब चलेगा। सिमिलर नेम्स, खाली ध्यान रखना है आपको इसका, टू एंड बाय, टू फॉर रिसीट, बाय फॉर पेमेंट, and then no narrations also over here. And purchased a wooden shelf, so you can write buy wooden shelf, you can also write buy furniture या buy wooden shelf। कौन से कॉलम में जाएगा तो लेजर कॉलम। ये हो गया आपका सम खत्म। ओके, अभी आपको करना है नॉर्मली जैसे बैलेंस करते हो वैसे बैलेंस करना है आपको। कौन सा साइड बड़ा होगा यहाँ पे, विच साइड विल बी ग्रेटर? Debit. Debit. Amount received side. अमाउंट रिसीव, डेबिट साइड, मतलब इन अ वे डेबिट साइड, रिसीट साइड। ओके, तो your amount received will always be greater than your payment part, because obviously it's a cash part, cash account जैसा ना, petty cash and petty cash both need to have normal balance। ओके, डेबिट बैलेंस होना चाहिए इसका। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ये जो टोटल पेमेंट लिखते हो ना, इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देना टोटल पेमेंट्स, राइट हैंड साइड पे, टोटल पेमेंट्स। ओके, जस्ट मेंशन देयर टोटल पेमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड टॉप पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, और कुछ नहीं, टोटल पेमेंट्स, ओनली पेमेंट्स is also fine, total payments। Now, how to close down the petty cash book? There are 3 steps to close down petty cash book. It's simple balancing only। कैसे करने का देखो, मैं यहाँ पे एक 2 पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं, दिख रहा है आपको? अभी यहाँ पे आपको सब वर्टिकल टोटल्स लिखना है कॉलम का, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हुआ 100, ट्रैवलिंग का हो गया 75, ये हो गया 95, ये हो गया 92, फिर वेजेस है 105, फिर रिपेयर से 175, ये है 2 + 3 395, एंड ये हो गया 290 है। Okay, once you have done this, there is this common cell you can see over here. Can you see that? I've highlighted it in red। यहाँ पे आपको दोनों का टोटल मैच करके देखना है। ऑब्वियसली आपने हॉरिजॉन्टल टोटल भी किया हुआ है और ये वर्टिकल टोटल भी किया हुआ है, ये सबका एक कॉमन टोटल आएगा जो कि होगा आपका टोटल पेमेंट्स, पेमेंट का टोटल दिखेगा आपको, वो देखो आपको मिलना चाहिए सेम, vertical horizontally, this is total payments। पेमेंट का टोटल आपका ये कॉमन सेल में दिखना चाहिए, टोटल ऑफ पेमेंट। What do we need to do there? टोटल एड अप 100 + 75, 175 + 95, वर्टिकली करो हॉरिजॉन्टली करो, कैसे भी करो, वो कॉमन टोटल आना चाहिए, दोनों मैच करके देख लेना, सेम आना चाहिए, So आएगा ही वो। हाँ, if we put electricity in sundry expenses, then our totals will be different. no, only the column total will be different। Yeah, column total will be different. Yeah, that's fine। करो टोटल, कितना आ रहा है आपका? This common total would be same। What is this total? मुझे 1237 आ रहा है। 1327. Yeah, 1327. 1327 होगा, 1327। 1327 is this common total। मतलब इतने का खर्चा हो गया, इतने का पेमेंट हो गया, फिर क्या करने का, टोटल पेमेंट कर लिया ना, उसका 2-3 लाइन छोड़ के ऐसा 2 पैरेलल लाइन करो टोटल रुपीस का, नॉर्मल बैलेंसिंग करते हो ना वैसे ही कर रहा हूँ, खाली एक चीज मैंने एक्स्ट्रा की, इधर टोटल पेमेंट कर दिया। नॉर्मली हम लोग टोटल पेमेंट नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे पेटी कैश बुक में वो फॉर्मेट है तो आपको दिखाना पड़ता है। फिर तो नॉर्मल बैलेंस, विच साइड विल बी ग्रेटर, रिसीट साइड विल बी ग्रेटर, तो रिसीट का टोटल देखो 1500, वो दोनों बाजू लिख लो 1500। अभी 1500 - 1327, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, 1500 - 1327,
तो कितना होता है 1500 minus 1327? 173 है। 173. इधर क्या लिखना है? बाय बैलेंस CD. जैसे कैश बुक में लिखते थे ना, सेम वे बाय बैलेंस CD. डेट आपका होगा लास्ट डेट ऑफ द मंथ 20th February, टोटल के ऊपर मैंने जैसा बनाया वैसे ही. ओके, टोटल और पेमेंट के बीच में बैलेंस दिखेगा. टोटल 1500 एंड ऊपर पेमेंट का टोटल, उसके बीच में बैलेंस. रिसीट माइनस पेमेंट, दैट इज बैलेंस. एंड व्हाट विल दिस बाय बैलेंस CD बिकम इन द नेक्स्ट मंथ? To balance BD. हाँ, टू बैलेंस BD. तो ये साइड आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड साइड 173 आ जाएगा टू बैलेंस BD. ऑपोजिट साइड पे. This is on 1st March 11 to balance BD 173. It indicates that already we are having 173 at the beginning of next month. Now what does impressed system state? Impressed system क्या बोलता है कि आपको अभी वापस 1500 मिलेगा क्या? Will you receive 1500 rupees again? Remember we discussed that impressed part in the last lecture. You Will you will receive? He received the 1000 amount that is required 620. to make the total 1000. हाँ, now the total should be 1500. That total amount is called float or impress. So 1500 is called as the float amount, which is decided in the first day of the year. तो पहले डे पे आपने डिसाइड कर लिया है. अभी के बाद हर एक महीने के बिगनिंग में उसके पास 1500 ही होना चाहिए. तो कितना मिलेगा उसको टू मेक दिस टोटल 1500? 1327. 1327. ओके, 1500 minus 173. 1500 minus 1, तुम्हारे पास 173 है, तुमको और कितना दूं? तो 1500 बनेगा, 1500 बनेगा, तो 1327. कौन से डेट को मिलेगा? 1st मार्च. कैसे मिलेगा? ऊपर चेक कर लेने का. पहले दिन पे कैसे आया था? चेक से. तो आगे भी अज्यूम करना है कि वो चेक से ही आएगा. अगर ऊपर कैश से आ रहा है तो आगे भी कैश से आएगा. अगर ऊपर चेक से आ रहा है तो आगे भी चेक से आएगा. Is that clear? That's how you do the problem. Come to sum number 9. Come on, draw. Sum number 9. इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है. One is the format, column heads, and the second is presentation. Cancellation avoid करना है. बाकी तो प्रॉब्लम चिंदी है, कुछ नहीं है, छापना है. Just छापify the question and simply balance it at the end. जिस गरीब लोग का है. Necessary that all those small columns that we are making for each account head, we have to make on that separate page only. Like, can we include it in the first page? हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ना थोड़ा सा 1-2 कॉलम. बट जरूरत पड़ेगा नहीं, ये मेरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसके लिए बड़ा है थोड़ा. वो एग्जाम में हम लोग पेपर्स पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, एकदम वो आराम से फिट हो जाता है. ऊपर से बचेगा आपका राइट हैंड साइड में. तो दोनों पेज को मिला के करना है ना. हाँ हाँ भाई, ये तो बताया तो था. यहाँ पे आपका मिड पार्टीशन है. दिस इज द मिड पार्टीशन. ये जो zigzag लाइन दिख रहा है ना, दिस इज द मिड पार्टीशन. सो ड्रॉ द फॉर्मेट. इसमें पहले से आप कॉलम हेड्स बना के मत रखना, आप खाली बेसिक फॉर्मेट ड्रॉ करके रख सकते हो. अमाउंट रिसीव, CBF, डेट, वाउचर नंबर एंड टोटल पेमेंट्स. बाकी कॉलम्स कितना बनाना है, यू डिसाइड फ्रॉम द क्वेश्चन. देखो, क्वेश्चन 9 आई एम डिस्कसिंग. Enter the following transaction in the analytical petty cash book under impressed system for the month of April 2011. Impressed money was maintained at 1500. What is the impressed money? The fixed amount, float amount. That is 1500 to be maintained. First mark it down, then you draw the remaining columns. 2011 April, cash balance is 120. Cash balance का मतलब ये petty cash balance they are talking about. So already we are having a balance of 120 rupees. What does that indicate? Is this the first month of the business or a continuing month?
Continuing month. Continuing month. Already you are having 120 ka balance, and they also given you the float amount. The fixed amount to be made is 1500. So how much will you receive from the main cashier so that it becomes 1500? 1380. 1380 you will receive. Is that clear? तो ये आपको देंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 1380 मिलेगा. अगर वो रिसीव नहीं करोगे तो आप पे नहीं कर पाओगे खर्चे. Are you getting that? तो पहले बैलेंस और फिर पैसा रिसीव करना है. एंट्री क्या बनेगा? टू कैश या टू बैंक? How are we receiving? Have they specified anything? How are we receiving the money? No. So petty cash to cash. So to cash. Is that clear? All of you got that? चेक दिया तो टू बैंक, कैश दिया तो टू कैश. कौन से कॉलम में जाएगा ये दोनों अमाउंट्स? तो ऊपर का 120 है और फिर 1380 जो भी आया है, कौन से कॉलम में जाएगा? Amount अमाउंट received. रिसीव, द रिसीट साइड. जब पैसा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस ऑलवेज, पैसा आया हुआ है और बाद में मिला नया पैसा, दैट इज आल्सो रिसीव्ड. Give a gift to clerk Sridhar. Now it's all payments. Give a gift to clerk Sridhar. Staff welfare. Staff welfare. Gifts don't come in staff. expense. Sundry expense. गिफ्ट्स और स्टाफ वेलफेयर में थोड़ा सा फर्क है. गिफ्ट्स मतलब क्या है कि ये बहुत ओकेजनली होता है, रेयरली, दिवाली पे, होली पे, समटाइम्स ऑन दशहरा. स्टाफ वेलफेयर इज समवट रेकरिंग बेसिस का आइटम. आप खाना पीना, लंच, डिनर, ओकेजनली, वीकली, ट्वाइस इन अ वीक, मे बी मंथ में 4 times करते रहते हो, ओकेजनल आइटम. ओके, तो लेस रेगुलर आइटम, गिफ्ट वगैरह, चैरिटी डोनेशन सब सन्ड्री में डालते हैं. गिफ्ट विल ऑलवेज गो अंडर सन्ड्री. स्टाफ वेलफेयर में क्या जाएगा? खाना पीना, घूमना फिरना एंड एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय. पेड फॉर सेंडिंग रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट. Postage and telegram. Postage and telegram. Washing charges paid to Pune. Washing, cleaning. Wages. Washing, cleaning, sweeping. Wages account. Sorry, wages. Sundry. Wages में खाली wages for goods या casual worker या labor को दिया है तो. Okay? For goods basically. Goods को हेरा फेरी करवाया या फिर बनाने में कुछ help किया, कुछ बनाने में, वो wages. Washing charges, cleaning charges, sweeping charges, tips, ये सब आपका sundry. Dusters, sundry. Paid for auto charges. Traveling and conveyance. Very good. Traveling and conveyance. You have a loan to Pune Rohit. Ledger. Very good. Loan, personal account. So ledger. Paid for cartage. Carriage and Carriage and cartage. Carriage and cartage. Cartage मतलब transportation expense on goods. Paid for Ola bill of employee. Traveling and conveyance. Ola, Uber, taxi fare, bus fare, train fare. Purchase stamp pad, paper clips, carbon papers. Printing and Printing and stationery. Purchase calculators. Stationery. Printing and stationery. Printing and stationery. Paid for repairs of machinery. Repairs and rental. So now you decide upon the columns and then you draw accordingly. I think we have number 1, that is printing and stationery. Then do we have postage and telegram? Yes, postage and telegram bhi hai. Do we have traveling and conveyance? Yes. Yes. Do we have carriage and cartage? Yes. Carriage and cartage. And we have advertisement and publicity. No, we don't have that. Advertisement नहीं है अपने पास. नहीं. Then wages है, wages भी नहीं है. Repairs है. हाँ. Repairs and renewal है अपने पास. Staff welfare है क्या? नहीं है. Staff welfare भी नहीं है. तो बच गए अपना sundry, LF and ledger. Last 3. ये sundry है ना? Sundry, LF and ledger ये हमेशा last में रहेंगे. In your sequence, sundry, LF and ledger always at the end. 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 4 कॉलम हो, कितना भी कॉलम हो, लास्ट में sundry, LF and ledger. Sundry, LF, ledger at the end always. Okay.
What if we don't have any account that goes in ledger? Then you leave that ledger part. Don't make it. We will leave LF or we draw LF तो रहेगा. LF क्यों है? क्योंकि ये सब लेजर में पोस्ट होगा ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट में, पोस्टेड टेलीग्राम में, traveling conveyance में, carriage cartage में, even in petty cash account in the ledger. So for that reason you have that LF. So वहाँ का पेज नंबर दिख जाएगा. This is a journal ना, तो LF तो रहने ही वाला है. Ledger गुल हो जाएगा. If you don't have that personal or real account transactions, then you don't have that LF. So does the order of printing and stationery, postage and telegram and all that matter? Does the Order, like if we put ना बाकी किसी का भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में लिखो, खाली ये 3 लास्ट में रखना ध्यान से. ये जो रेड से हाईलाइटेड है ना, इनका ऑर्डर चेंज मत करना. ये आइटम्स ऐसे के ऐसे दिखाना, बाकी बीच वाले कोई भी ऑर्डर, नो प्रॉब्लम. ओके, बीच वाले आइटम्स कोई भी ऑर्डर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम. Let's begin. What should I write the very first item? brought down 120. To balance brought down. ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमने लास्ट सम एंड किया था. ये यहाँ से ये सम स्टार्ट हो रहा है. ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. It's not the same sum obviously. Okay, but continuity. So to balance brought down. Date is which date? ये अप्रैल का कर रहे हो तो 1/4/11 और अमाउंट कितना लिखोगे? 120. अमाउंट रिसीव्ड, डेबिट साइड, रिसीट साइड, पैसा आया नहीं, पैसा था ऑलरेडी, डेबिट बैलेंस 120. एंड देन हाउ आर यू रिसीविंग, बाय कैश और चेक? जस्ट सी टू इट. कैश है तो टू कैश और चेक है तो टू बैंक. चेक है तो टू बैंक. 1380 किधर से मिला, समझ में आया सबको? हेलो, 1500 नहीं मिलेगा तुमको, आपके पास ऑलरेडी 120 था ना, तो why will you receive 1500 again? That float amount is the total amount you should have after getting that 1380. Got it? करते जाओ आगे फटाफट. बाकी तो सब तो बाय 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 बाय. छापो find the question and write the columns. This is second one. Give a gift to clerk Shrikar. So buy gift to clerk. This is 101. टोटल पेमेंट्स में लिख दो एंड सन्ड्री में चला जाएगा गिफ्ट्स वगैरह. देन 5th of April. Registered post and speed post. So buy registered post and speed post. This is 50 rupees under postage and telegram. Then washing charges. So buy washing charges. 15 rupees under sundry. Then paid for auto charges. So buy auto charges. 50 rupees under traveling and conveyance. Then give a loan to Tune Rohit. So buy loan to Rohit. 400 under ledger. Then cartage. So buy cartage. 30 rupees. That will go under carriage and cartage. Ola bill for employees. So buy Ola bill for employee. What if you would have paid Ola bill for customer? Advertisement. And it would have been advertised.
Advertising. Here it is traveling and conveyance. Because the purpose is for employee, business. Purchase stamp pad, paper clip, carbon paper, buy stamp pad, paper clips, 85. This is under printing and stationery. So you wrote 106 in cartage and carriage. Yeah. Oh Should be my traveling and God. conveyance. Sorry. Traveling and conveyance. And purchased calculators or buy calculators. Calculators are not assets. Huh? Calculators are expense. 200 rupees under printing and stationery. एक साल में यूज हो जाता है assumed है. Even laptops these days, mobile phones have become like expense only. 1 year, 2 year only people use them. इतना यूसेज बढ़ गया है कि 2 साल में 3 साल में स्टार्ट करना पड़ता है. Paid for repairs, buy repairs. That is 120. Repairs and rentals. खत्म. ये हो गया आपका पोस्टिंग. चेक. Clear with the posting part, all of you? Just remember the prefixes 2 for receipt and buy for payment. ये 2 ये buy, ये 2 ये buy. और फिर टोटल करो आप, वर्टिकल टोटल्स कर लो इंडिविजुअल. दिस इज 285, दिस इज 50, दिस इज 156, 30, 120, 116 and 400. Then in this common cell you mention both the totals. कॉमन होना चाहिए, वो वेरीफाई कर सकते हो. कुछ इंडिविजुअल सिली एरर हुआ होगा तो पता चल जाएगा आपको. This makes it how much? $500, $600, $36, $36. 1157 आ रहा है क्या? What are you getting 1157? Total of payments. Is it 1157? Please check. 1157 is the total of payments. Common cell में यहाँ पे. Okay. दोनों total payments, horizontal and vertical. And then simply balancing part. तो 2-3 लाइन छोड़ के टोटल रुपीस लिखना है, जैसे आप करते थे ना कैश बुक में. सेम वे यहाँ पे टोटल रुपीस 2 पैरेलल लाइन करके. टोटल कौन सा साइड बड़ा होगा हमेशा? ऑब्वियसली रिसीट साइड. ओके. कैश एंड पेटी कैश दोनों में रिसीट ही बड़ा होगा ना, है ही नहीं तो पे कैसे करो? एसेट है, डेबिट बैलेंस ही होगा. तो 1500 है, यहाँ पे रिसीट बड़ा है 1500 माइनस द पेमेंट 1157. So you get it as 343, I think 343. This is by balance CD on 30th April 11. What will this buy balance CD become in the next month? It will become what? 2 balance BD. On the opposite side. Okay, student make this silly mistake. नीचे लिख देते हैं पेमेंट में, वो गलत है. हमेशा क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट था, ऑपोजिट. तो इधर पेमेंट का रिसीट. ओके.
So buy balance CD will become to balance BD on the receipt side. And again, जो ऊपर किया था same process. To cash या to bank. To cash. क्योंकि ऊपर to cash था तो नीचे भी to cash आ जाएगा. Which side you will write the amount? To cash, receipt or payment? Receipt. Receipt. And how much will you receive to make this amount 1500? Will you receive again 1500? No, 1157. You will receive 1157. To make this amount 1500, how much you are supposed to? 1500 minus 343, 1157. Is that clear? Sir, why in the cash there is account and nowhere else there is account? No, that's okay. You can also write cash में भी देखो ना, नहीं लिखा तो चलेगा. No problem. श्रीधर, हर्ष, पर्सनल के लिए लिखा नहीं लिखा चलेगा. That's okay. बाकी सब तो वैसे भी अकाउंट्स नहीं है ना. कैश में भी लिखो मत लिखो चलेगा. वो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो जर्नल ही है. लेजर में बराबर इसका पोस्टिंग करने का, जैसे कि कैश बुक में इट शुड बी बाय पेटी कैश अकाउंट एंड पेटी कैश अकाउंट में इट विल बी टू कैश अकाउंट इन द लेजर. जैसे कि ये एंट्री हो गया, वॉशिंग चार्जेस 15 rupees. So entry is not washing charges to petty cash. Entry is what? Sundry expense to petty cash. Sundry expense के अकाउंट में टू petty cash अकाउंट, petty cash अकाउंट में बाय sundry expense अकाउंट. बाकी इसमें लिखो मत लिखो चलेगा. Do we have to write total payments on the right? हाँ, टोटल पेमेंट ऊपर लिख दो हेडिंग में. ये टोटल पेमेंट्स, ओनली पेमेंट्स. ड्रॉ फॉर सम नंबर 10 देन. सम नंबर 10 का ड्रॉ करो फटाफट. Basic format you can draw it and keep. कैलेंडर स्टेशनरी में जाएगा. Discussing. Now let's decide upon the columns. देखते जाओ. Enter the following transactions in the petty cash book having analysis columns for the month of October 2011. Now all these petty cash books are on monthly basis. Monthly का end हो रहा है, 31st को end हो रहा है. 31st 1st October को received from head cashier 1950. मुझे बताओ, is this the first month or a continuing? Received from head cashier 1950. First month or continuing month? First month, because First month interest only. is not given. हाँ, बैलेंस दिया ही नहीं है तो मतलब फर्स्ट मंथ है, तो अभी से 1950 ही मिला है. तो आज के बाद व्हाट विल बी योर इंप्रेस्ड अमाउंट? आज के बाद आपका फ्लोट अमाउंट क्या हो जाएगा अभी नेक्स्ट मंथ के लिए? 195. 195. अभी से आपका फ्लोट अमाउंट होगी 195. ओके, दिस इज द फर्स्ट मंथ. कंटिन्यूइंग मंथ है तो बैलेंस मिलेगा आपको, ओपनिंग बैलेंस. ओके, ना रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर 1950. तो क्या एंट्री होगी? टू कैश या टू बैंक? कैश. टू कैश. कुछ नहीं जा रहा, टू कैश. अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में चला जाएगा, AR लिख दो, अमाउंट रिसीव. फिर सब पेमेंट्स पेड फॉर प्रिंटिंग ब्रोशर्स एंड कैटलॉग्स. थिंक अबाउट इट. ब्रोशर्स, कैटलॉग्स. Printing and stationery. Advertisement. रीजन इज इंपॉर्टेंट. प्रिंटिंग देख के कंफ्यूज मत हो जाना. क्या प्रिंट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. देखो, आप इनवॉइस प्रिंट कर रहे हो, हमने अभी भी देखा ना डॉक्यूमेंट का. इनवॉइस बुक प्रिंट करवा रहे हो, रिसीट बुक, बिल बुक, वाउचर बुक, ये सब प्रिंट करवा रहे हो, तो ये सब किस में जाएगा? Advertisement. अरे इनवॉइस. अरे नहीं, invoice. Sorry. डेबिट नोटबुक, क्रेडिट नोटबुक, बिल बुक, वाउचर बुक,
ये सब किस में जाएगा? इसका प्रिंटिंग किस में जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. दैट एक्सपेंस विल गो इन प्रिंटिंग एंड नॉर्मल प्रिंटिंग बिजनेस के लिए हो रहा है. प्रिंटेड लेटर हेड्स मालूम है आपको? बिजनेस का नाम होता है ऊपर और उसमें आप डिटेल्स करके भेजते हो जो भी है. तो लेटर हेड्स हो गया, बिल बुक हो गया, ये सब आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में. बट प्रिंटेड ब्रोशर्स, प्रिंटेड कैटलॉग्स, प्रिंटेड कैलेंडर्स, प्रिंटेड लेबल्स, ये सब किस में जाता है? प्राइस लिस्ट, सेल्स लिटरेचर, Advertisement. ये सब एडवर्टाइजमेंट. Advertisement. तो इसका रीजन इज इम्पोर्टेंट. व्हाई डू यू प्रिंट ब्रोशर्स? क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए है या ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए? किसके लिए होता है? Advertisement Advertisement. purpose. Got it? वो सब तो आपका इंटरनल यूजेज के लिए होता है ना, वाउचर्स, रिसीट बुक, बिल बुक, तो वो प्रिंटिंग में जाएगा. तो प्रिंटेड ब्रोशर्स एंड कैटलॉग्स इज एडवर्टाइजमेंट. पेड फॉर कोरियर चार्जेस 43 एंड प्रिंटेड न्यू ईयर कैलेंडर्स 2 हैं. कोरियर चार्जेस किस में जाएगा? Postage and telegram. वेरी गुड. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कम्युनिकेशन का एक्सपेंस है. एंड प्रिंटेड न्यू ईयर कैलेंडर्स, Printing and stationery. नहीं एडवर्टीजमेंट में जाएगा. कैलेंडर्स आर ऑलवेज फॉर एडवर्टाइजमेंट. अगर आपके घर पे कैलेंडर होगा तो देखो उसमें बड़ा सा ऐड होगा. कैलेंडर्स आर द वेरी आपका लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजमेंट का वन ऑफ द मेथड. पूरा 12 महीने तक आप उसको ऐड है. लिज्जत पापड़ और फलाना डिमका कंस्ट्रक्शन कंपनी, फलाना डिमका बिजनेस का नेम, सम नेम यू विल हैव ऑन Chocolate का द भी आता है. कैलेंडर. सॉरी, ससा साबुन पहले आता था. Food products like Okay, chocolates and food products, chocolates and all. So you'll find calendars are apt method of advertisement. Remember, calendar, wall clocks. Sometimes you'll find wall clocks. उस पे भी रहता है. So these are for advertisements. Okay. So printed New Year calendars, that is advertisement and publicity. Purchase 3 office files of 50 each. Printing and stationery. Printing and stationery. Give tips to watchman. Sundry. Sundry expense. Give an advance to clerk. Ledger. Advance, Isha ji. Pay attention. Advance to clerk, that is ledger. Okay. Personal account. Then paid for printing. Khali printing. Printing and stationery. And stationery. Paid to Sakal newspaper for advertisement. Advertisement, publicity, newspaper ad दिया. Paid cleaning and washing charges. Sundry. Sundry expense. You have donation for Diwali celebration. Donations are also Sundry. sundry. Purchase revenue stamps. अब देखो. Postage and नहीं, there is a peculiarity between two stamps, postage stamps and revenue stamps. अगर आपको postal stamps दिया है ना, postal stamp और revenue stamp में थोड़ा सा फर्क है. सुनो ध्यान से. Postal stamps मतलब वो चौरस वाला, you know that square वाला, small postcards पे लगता था पहले. That is postal stamps. Okay. Postal stamps will go under postage and telegram. That is mainly for communication purpose. Whereas revenue stamps is that big one, the one you put it on bond paper or your affidavits and all. Okay, so that big one, revenue stamp. So that revenue stamp, either you can put it under printing and stationery or sundry. The better option is वहाँ पे sundry में डाल सकते हो, revenue stamps. Postal stamps है तो postage and telegram, revenue stamps है तो sundry expense. So sundry or what is the other? Printing and stationery. Then put it under printing and stationery. Thank you, sir. Come on, welcome. stamps Columns. will be under post stationery only, no? What? Revenue stamps. Revenue stamps, either stationery or sundry. We'll put under sundry. Okay. Majority of the colleges they take under sundry. Only Podar has sometimes the differential opinion. But otherwise sundry. Revenue stamps are sundry. तो कॉलमेट्स कौन से देख लो अभी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. पोस्टेज एंड टेलीग्राम. हाँ. वो भी है. पोस्टेज एंड टेलीग्राम. हाँ है. नहीं. टेलीग्राम हाँ है. एक ही है क्या, लेकिन हाँ कुरियर है. देन वी हैव ट्रैवलिंग है. नहीं ट्रैवलिंग नहीं है. कैरेज कार्टेज है, वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. एडवर्टाइजमेंट है. है. एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी है. देन
Wages, do we have wages? ना sundry बाकी है. Repairs? नहीं. वो भी नहीं है. Electricity भी नहीं है. हमारा staff welfare भी नहीं है. Sundry हो गया. Sundry expense, LF and ledger. These many columns. Let's begin. 1st October 11. This is the first one. So no balance, no balance. This is like your first problem which we did. Okay. To cash या to So bank. you written the date and amount received. To cash या to bank. To cash या to bank. So to cash amount received में आएगा 1950. Amount received it is 1950 and then onwards it is all buy. 3, 10, 11. Same छापना है. Buy printing, brochures and catalogs. This is 102 advertisement. Then it courier charge. ये एक लाइन में लिख सकते हो by courier charges and New Year calendar. और इधर कैसे लिखने का अभी दोनों अलग अलग कॉलम है ना. Courier is postage and calendars are advertisement. So total is 243. So total 243. I'll show it under total payment. फिर उसका ब्रेकअप इंडिविजुअल कॉलम में लिख देने का. Courier is under postage 43 and advertisement में 200. ऐसा ये समझा आपको. ये horizontal total will be 243. 43 under postage and 200 under advertising. That is the use of that horizontal column. You have 2-3 items, then you can write it. अगर ये क्लिक नहीं हो रहा है अलग अलग लिख दो. सेम डे पे 2 एंट्री कर दोगे अलग अलग ऊपर नीचे तो भी चलेगा. टोटल पेमेंट और इंडिविजुअल पोस्टेज अलग और कैलेंडर अलग, एडवर्टाइजमेंट अलग तो भी चलेगा. Then purchase 3 files for office work. Buy office files 3 into 150 करना. 3 into 50 करना तो 150 is the total amount. Then tip to lift man. So buy tip to lift man. It is watchman. Tip to watchman. This is 20 rupees under sundry. Then advance to Shrikant. So buy advance to Shrikant 280. The ledger. Paid for printing. So buy printing stationery. Paid for Sakal newspaper. So buy Sakal newspaper advertisement 274. Cleaning and washing. So buy cleaning and washing. Sundry. Donations. So buy donations. Revenue stamps. So buy revenue stamps. Sundry. Then that completes my posting. Then totals. This is 312 43 23
576, then 66, 131, 281, and 280. Are the totals right? Please check. Then in this common cell, just verify the vertical and horizontal total. Should be the same amount. Anyhow you do, ऊपर से नीचे जाओ या राइट से लेफ्ट करो, कैसे भी करो, टोटल सेम आना चाहिए. 560. Not anyone has done the total. 355, 560. 1492 आ रहा है क्या? 1492. And has got the total payments 1492. Yes. Oh. 1492 is the total of payment. And write your total of payment. What to do next once you do total of payment? What is the next step? Total of the bolo. Total of the receipt side. Always receipt side will be greater. Total of that, write it at both the places. 1950 minus the payment will give you balance by balance CD. कितना आएगा ये by balance CD? 458 आ रहा है. 458. Yes. And what will this by balance CD become? It will become 2 balance BD. Opposite side 458. Obviously amount received. क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ 111 को इतना पैसा पड़ा है, और फिर वापस ऊपर चेक कर लेने का, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, कितना पैसा रिसीव करना है टू मेक दिस 1950. 1492. It is basically 1950 minus 458. 1950 minus 458. That is what you will receive. Is that clear? Got it? I want you all to try the next sum on your own. We'll discuss the markings. I want you all to take some number. Sum number 6. Sum number 6. Sum number 6. Videos on, all of you. Prepare the following transaction, enter the following transaction in petty cash book having an analysis column for the month of Jan. Received cash from head cashier 7,000 rupees. Received cash from head cashier 7,000 rupees. That is cash received. The two cash amount received. Telephone charges. किसमें जाएगा telephone charges? Communication. हाँ, तो अभी क्या करना, खाली जो हेड है ना पोस्टेज एंड टेलीग्राम, उसको यू हैव टू मेक इट पोस्टेज एंड टेलीफोन. जस्ट मेक इट पोस्टेज एंड टेलीफोन. ओके, instead of postage and telegram you can make it postage and telephone. All communication expenses in that. Postage and telephone 900. Paid for courier postage and same telegram. postage and telephone. Telegram की जगह telegram की जगह भी टेलीफोन बना. टेलीफोन एक्सपेंस है ना साथ में. हाँ हाँ. Just make it postage and telephone now. Only for this sum. Sixth sum. We are doing sum number 6. Postage and telephone
पहला telephone भी उसमें, courier भी उसमें. Purchase 4 office files of 250 each and paid for Xerox charges 100. Printing and stationery. Printing and stationery. Give a tip to watchman. Sundry. Sundry. Advance to Swapnil. Sundry. Ledger. Ledger. Advance मतलब वापस आएगा ना Advance. benefit. Personal account. Benefit मिलना बाकी है. Sundry मतलब expense गया, वो वापस नहीं आएगा. Advance मतलब benefit मिलेगा आपको. And Geo charge, Geo recharge, paid for Geo recharge. Postage and telephone. Telephone expense. Telephone communication. Okay. Data, internet, postage, courier, सभी. Paid to Indian Express for advertisement. Advertisement publicity. Cleaning charges. Sundry. Sundry. Give donations. That is also sundry. Purchase revenue stamps. That is also sundry. How many columns we have? Do we have printing stationery? Yes. Postage and telephone है. Printing and stationery है. Do we have traveling conveyance? No. Carriage cartage भी नहीं है. Advertisement है. Yes. Then Sundry. सीधा sundry है ना. Wages नहीं है. Repairs नहीं है. Staff welfare नहीं है. Sundry, LF and ledger. So basically you have just 3 columns and then sundry, LF, ledger. You have printing stationery, postage, telephone. You have advertisement publicity, sundry, LF, ledger. Inclusive of ledger, 6 columns. 5 without LF. So what's for Geo recharge? Postage and telephone expense. Prepaid recharge, mobile bills, internet charges, data recharge, telephone expense, courier, postage, sorry, postage and telephone, communication. Hello? This is again for theory purpose I am telling you. Okay? Practically कोई business में postage expense है ही नहीं, खाली telephone हो रहा है. और nowadays postage तो बहुत कम हो गया, कोई use नहीं करता है, तो खाली telephone expense है. Okay? कोई business में telephone और internet दोनों बहुत ज़्यादा हो रहा है. टेलीफोन का मोबाइल बिल्स भी बहुत आता है, बातचीत भी बहुत होती है, और इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का चार्जेस भी बहुत है, वाईफाई चार्जेस है. तो ही में मेंटेन 2 सेपरेट कॉलम्स, इंटरनेट चार्जेस एंड टेलीफोन चार्ज, वो अलग कर. Can you repeat the column heads? Column heads are printing and stationery, then postage and telephone, then advertisement and publicity, then sundry, LF, ledger. Sundry, LF, ledger. So try this on your own. Fatapat.
Yeah, Mitibai start हुआ college. Yeah. NM what they did, basics हो गया NM में. We just did the objectives of bookkeeping and all about bookkeeping. For first second chapter तक. Yeah, first chapter, starting part. डबल एंट्री एंड ऑल अभी तक चालू नहीं किया है ना, कर लिया वो सब. मॉडर्न कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट. They did the first chapter, got 2-3 pages, and that's it. अच्छा. How are the lectures? Boring. 3 घंटा कितना 3.5 है कि 3 hours है? Approximately 1 to 4:45. अरे बाप. 4 hours. Band तो भी. that college का duration. What? Normally the duration is 12:30 to 6:30. 6 hours. 5.5 to 6. ऑनलाइन में पक जाता है ना इतना लंबा. At a stretch. चलो done. Got it, all of you? Just tell me the individual total of columns. Printing and stationery कितना है? $350. Postage and telephone. Total. 1570. Advertisement. 1200. Sundry. 950. Ledger. 700. 7. 100. Total payment. 770. 37. 4770. And balance में आपका total receipts are greater, that is 7,000, right? Minus 4770 is 2230, right? And that will become your to balance brought down 2230, and then to cash. That will be 477. Coincidentally, these two figures are same, 4770, 47. Total of payment and नीचे जो पैसा आना है वो coincidentally same हो रहा है. हर एक सम में same नहीं होगा. आगे पता चलेगा. When we'll get some receipt, like हाँ. that time it will be different. That time it will be different. Correct. You always have to compare this opening balance with your float amount. Float amount is what? 7,000. 7,000 minus opening balance. 2230 will give you 477. So we stop. Take some homework here. Markings ले लो. Sum number 11 is for homework. We'll just discuss it. And then we stop. So when they said 4 office files for 250, they meant 1 for 250 or 4 for 250? Is it given 250 each? No. Then it is total 250. It would have been 250 each. जैसे एक सम में था ऊपर 50 each. Then it would have been 150. यहाँ पे then it would have been 1,000. The total 250 है. Total 250. ये मिल रहा है आंसर सबको? पोस्टिंग क्लियर है सबको? बैलेंसिंग पोस्टिंग एनी डाउट्स? सॉर्टेड? वेरी सिंपल इट इज, राइट? कुछ है ही नहीं इसमें. 11th sum is for homework. I'm just discussing. You can mark down. Enter the following transaction in the analytical petty cash book under Impress system for the month of February 2011. Received a check from head cashier 2,700. First month or a continuing month? First. Received a check to 2 bank. Instead of 2 cash, it will become 2 bank. Amount received 2,700. So now onwards, 2,700 is your float amount. That is the mean. Got it? 2,700 is your float amount. Okay, interest amount.
purchase pencils, import papers, Printing stationery. stationery, paid for repairs, Repairs and repairs and renewals. renewals, Uber bill of manager Sundry. is traveling and conveyance. Uber, Tra- Ola, traveling one. Traveling. Sorry. Subscription for newspaper is Sundry. sundry. Refreshment to customers, Advertisement. Ranjit in settlement of his account. Ledger. Ledger. Wages to casual labor. Wages. Electricity bill. Sundry. Sundry में डाल सकते हो या electricity column बना सकते हो. Paid for carriage. Carriage and cartage. Carriage and cartage. And wooden chair is what? Ledger. Asset. Ledger. Wooden chair is ledger. Asset. Fixed asset. Small value asset. But asset है तो ledger. So columns आपको decide करना है उसके हिसाब से बनाना है. That one sum is for homework, and I think we have done the rest, right? 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब हो गया अपना. 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ बाकी है उसमें. हाँ एक बाकी, 8 बाकी. 1, 2, 3, 4, 5 and 8 are left. Mostly will be winding up in the next lecture. Complete हो जाएगा. उसके बाद I'll start with new topic, either BRS or depreciation. तो ये होमवर्क आपको सबमिट करना है कल शाम तक. डाउट्स है तो स्टिल यू कैन वेट, अदरवाइज Bye, sir. Thank you.